मैं सुबह उठा और वॉशरूम जाना चाहता था। As I walked into the bathroom जैसे ही मैं वॉशरूम में गया and opened the door, दरवाज़ा खुला, what I saw made me so sick I started to throw up. मैंने जो शीशे में देखा तो मुझे एकदम उल्टी सी आने लगी। What I saw, Pastor, was my face in that mirror. मैंने क्या देखा था? अपना चेहरा उस शीशे में। Now I had blisters 1 inch in size. अब जो छाले थे मेरे 1-1 इंच के बराबर थे। Starting from the center of my head. यहाँ सर के बीच में से शुरू होकर all over my ear and my face, पूरे कान और फेस पे, my neck and my shoulders. मेरे गर्दन पर और कंधों पर आ गए। This is what I look like. ये तस्वीर में जैसा आप देख रहे हैं ऐसा लगता था। And you can see that on the television screen. और ये टीवी पे देख सकते हैं। My head was deformed on the right side. मेरा सर भी एक तरफ से डिफॉर्म हो गया था। At the same time, the next morning, I woke up with chicken pox. और जब मैं सुबह उठा नेक्स्ट मॉर्निंग तो मुझे चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई। There is no cure for shingles. यहाँ इसका कोई इलाज नहीं था इस बीमारी का, शिंगल्स का। They took blood samples every day to find out why the immune system was not fighting back. वो हर रोज मेरा ब्लड का सैंपल लेते थे, खून लेते थे, ये देखने के लिए कि मेरा इम्यून सिस्टम क्यों नहीं काम करता। My face was deformed on the right side, and I couldn't even drink water without throwing up. मेरा ये इतना डिफॉर्म हो गया था, बिगड़ चुका था शेप मेरे इसका सर का कि मैं पानी भी पीता था तो उल्टी आती थी। They had to feed me intravenously to keep me alive. So वो इंट्रावेनस से उन्हें दवाई ये पानी पिलाते थे। The blisters were growing and joining in front of your eyes. ये छाले जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, आँख की तरफ जो उसे मिलते जा रहे थे उसमें। This ear became so big it was touching the shoulder. ये कान इतना बड़ा हो गया था कि मेरे कंधे को टच करता था। At one point they wanted to stitch the eye to save it. और वो मैं यहाँ तक चाहते थे कि मेरी आँखों को सी दें ताकि आँख बच जाए। I was having nightmares at night, so I would stay awake all day and then stay awake all night. मुझे रात को ऐसे बुरे-बुरे सपने भी आते थे और मैं हर रात जागता और दिन में भी जागता था। There is no cure for shingles. They were feeding me different drugs intravenously. इसका कोई इलाज नहीं था शिंगल्स का और वो तमाम तरह की दवाइयाँ मेरे वेन से चढ़ाते थे मुझे। That night, not only did I have chicken pox, but I had a high fever, a temperature of 107.6. वो सिर्फ ये चिकन पॉक्स ही नहीं था बल्कि बुखार भी मेरे को 107.5 का टेम्परेचर होता था। 104 is called hypothermia. Oxygen doesn't get to the brain and the brain cooks itself. 104 बुखार जो होता है वो ऐसा होता है कि इसमें ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाती। 108 is death. I was 0.4 away from death. और 108 जो है 108 जो है उसे डेथ बोलते हैं, डेथ का साइन है और मैं सिर्फ 0.4 नीचे था। Every day they took blood samples and every day I was getting worse and worse. हर रोज मेरे खून को टेस्ट करते थे, लेते थे सैंपल लेके और मेरी हालत बिगड़ती जाती थी। I was in strict isolation and critical condition. मुझे बिल्कुल उन्होंने अकेले में रख रखा था और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन मेरी थी। Even the doctors and the nurses would not come into the room without gloves and masks. डॉक्टर और नर्सेस भी कमरे में नहीं आते थे ग्लव्स और मास्क पहने बिना। Anita sat by the bedside all the 72 hours straight. अनीता 72 घंटे तक मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती थी। One day, 2 doctors came in and examined me. एक दफा 2 डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे टेस्ट किया। They had gloves and masks, so I don't know what they look like. So उनके पास ग्लव्स और मास्क पहने थे, मुझे देखने में पता था किस तरह के थे वो। But they examined me, and one said to the other, his immune system has shut down. So वो आपस में बातें करने लगे और उसने कहा कि इनका जो इम्यून सिस्टम है, लड़ने की जिस्म की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। The other doctor said, if his immune system is shut down, then he's going to die. So दूसरे डॉक्टर ने कहा अगर इनका ये लड़ने की शक्ति खत्म हो गई है तो ये तो इनकी डेथ हो जाएगी। What do you do when the very people that you have your trust in, the doctors, have given up and left you to die? आप क्या करोगे उस समय जिन पे आपका भरोसा है, उन डॉक्टर्स पे जो आपको कह दें कि बस आप बच नहीं सकते, हमारी बस की बात नहीं। I was brought up a Muslim all my life. मैं हमेशा एक मुस्लिम घराने में ही मेरा जन्म हुआ है, परवरिश हुई है। I did not know any God that was the healer. मैं नहीं जानता था कोई खुदा है जो चंगाई दे सकता है। I asked Anita to leave because I didn't want her to sit there and watch me die.
मैं अनीता से कहता था तू यहाँ ना बैठ, मैं नहीं चाहता था कि वो बैठे मुझे मरते हुए देखे। My wife had sat at her mother's bedside moments before she died. मेरी वाइफ अपनी माँ के बिस्तर पे बैठी थी जब उनकी डेथ होने वाली थी। Just a few moments before she died, her mother started to recount her childhood. मरने से पहले उसकी माँ ने अपने बचपन को याद करना शुरू कर दिया। That night I was in a coma and I started to recount my childhood. और उसी रात को मैं कोमे में चला गया और अपना मैंने बचपन याद करना शुरू कर दिया। The doctors called Anita out of the room डॉक्टर ने अनीता को कमरे से बाहर बुलाया and said that my condition was so bad that I would probably be dead by the morning. सो उन्होंने अनीता को बुलाया कि मेरी तबीयत इतनी चिंताजनक है और ख़तरनाक है कि शायद एक ही दिन और बचेगा। But if I lived through the night, अगर मैं रात को जी भी गया, this eye can be blind, आँख ये बिल्कुल अंधी होगी, this ear deaf, और कान बहरा होगा, this lip hang down, ये उसका होठ लटक जाएगा, the nerve endings on this side of the body have been damaged, नसें ये जो थी यहाँ पर वेन्स जब सब डैमेज हो चुकी थी, and they didn't know how much brain damage had been done. और उन्हें नहीं मालूम था कि दिमाग पर कितना नुकसान हो चुका है। This was the good news. ये तो अच्छी खबर बताते। One of the nurses looked at Anita and said, "How is your father doing?" I looked 75 years old. एक नर्स आके अपनी मेरी अनीता से कहने लगी कि आपके पिता का क्या हाल है। I had lost all my strength and all my बिल्कुल बूढ़े की courage. तरह लगता था और मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। I was afraid of death. मुझे मौत से बड़ा डर लगता था। Now I know why I was afraid of death. अब मैं जानता हूँ कि मैं क्यों डरता था। I had lost everything and my money didn't mean anything to me now. मैंने सब कुछ खो दिया था और मेरा धन दौलत मेरे किसी काम का नहीं था। I was like a drowning man going down for the third and last time. और मुझे ऐसा लग रहा था मैं डूबता जा रहा हूँ बिल्कुल नीचे। I cried out to God for help. मैंने चिल्लाया खुदा से। I was brought up a Muslim all my life. मैं हमेशा मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। So when I cried out, I thought Allah would help me. जब मैंने चिल्लाया जोर से तो मैंने कहा कि अल्लाह आके मेरी मदद करेगा। Or Muhammad would help me. और मोहम्मद मेरी आके मदद करेगा। But when I cried out for help, लेकिन जब मैं चिल्लाया, that very night, उसी रात को Jesus Christ walked in the room. यीशु मसीह मेरे कमरे में चल के आ गए। People say, as a Muslim, how did you know it was Jesus? लोग कहते हैं मुस्लिम होने के बावजूद आप ये कैसे जानते हो कि यीशु थे? The Muslims believe in Jesus, मुस्लिम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, but they believe that he's a prophet, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि वो एक प्रॉफिट है, a good man, अच्छा आदमी है, not the Son of God. खुदा का बेटा नहीं है। He was at the end of the bed. वो बिस्तर के किनारे पर थे। It was the outline of a person. वो ऐसा लगता